Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Mohammed Yusuf. Today I am going to discuss the adrenocortical hormone. We are going to start this chapter. Adrenocortical hormones. Before that, we can discuss one ayah from Quran, Surah Yusuf, ayat number 108. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen. आप कह दीजिए कि मेरी राह यही है, इस्लाम जो भी अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु पेश फरमा रहे हैं, मेरी यार यही है अदउ इलल्लाह कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, अला बसीरतिन हिकमत के साथ, यकीन और एतमाद के साथ, बसीरत के साथ। आना मैं भी बुलाता हूँ, वामन इत्तबानी और जिसने मेरी इत्तबा की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप ये कह दीजिए कि मेरी भी ये राह है कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ और जिन्होंने मेरी इत्तबा की है उनका भी रास्ता यही है। व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन, अल्लाह पाक है और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। ये आयत बताती है हमें कि ये हमने ईमान लाना है और इस ईमान को प्रोपेगेट करना है। हमने अल्लाह की माननी है और दूसरों को अल्लाह की तरफ बुलाना है। जो नबी का काम है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं ये, लेकिन ये दावत वाला काम आगे क़यामत तक जारी रहना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए और ये काम दीन को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, लोगों को अल्लाह, ये जारी रहेगा। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक दे। So we are going to talk about the adrenal glands. We know the adrenal gland. There are two adrenal glands located at the upper pole of the kidney, superior pole of the two kidneys. Weight of this gram is about this adrenal gland is about 4 grams. And there are two distinct areas, two distinct zones in the adrenal cortex and in adrenal gland. One is the medulla. The inner core of the gland is medulla, and adrenal cortex outer layers are the cortex. Now, adrenal medulla, about 20% of the total gland, we will see in the diagram, 20% of the this, and it is related to the sympathetic nervous system. It produces norepinephrine and epinephrine, these two hormones, which are very much related to sympathetic system, and their production also occurs with the stimulation of the sympathetic system. So they are usually discussed. The adrenal medullary hormone epinephrine and norepinephrine are discussed along with the sympathetic system. Epinephrine and norepinephrine. And adrenal cortex, we will discuss these adrenal cortical hormones here in this chapter. Adrenal cortex produces steroid hormones, derivative of cholesterol. They are known as corticosteroids because the steroid produced from the cortex, corticosteroids, they are synthesized from the cholesterol. All the steroids are synthesized from the cholesterol, and all have almost that sterol ring is present in all the steroid hormones. Whether they are cortical hormones, steroid hormone, or they are sex hormones, male sex hormones and female sex hormones, all are steroid. The basic that sterol ring, cyclopentanophenanthrene ring is present in all those. So there are slight differences. Some elements are added or in different chains are added or removed from this, and the slight very important differences in the function. But those small differences in structure, addition or removal of some radical or some chain in the structure causes drastic change in the functions. Now there are more than 30 steroids have been found to be secreted from adrenal cortex, but important one we will only discuss, that is, and they are grouped into 3 classes. One group is mineralocorticoid. Out of these 30, maybe more than that, there are steroids which are concerned with the affect the electrolytes, the minerals in the body, in the extracellular fluid, unko control karte hain. So they are named as mineralocorticoid. Sodium and potassium, etc. And aldosterone is the major mineralocorticoid.
सबसे ज्यादा काम यही करती है. सो you practically it is only aldosterone. Maybe there are 10 or 15 more, but practically it is only aldosterone. 95% of the mineralocorticoid activity is because of this only aldosterone hormone. Then there is another group of hormones here out of those 30, which are, they increase the blood glucose level, so they have been named as glucocorticoids because they increase the blood glucose level. But they have got very important additional effects both on protein and fat metabolism. Besides protein and fat they are very important in stress. They are very important in immune system. We will talk about that. But they are named as glucocorticoid because of their effect on the blood glucose level. They increase the blood glucose. Hyperglycemic they are. So cortisol is the main glucocorticoid, as aldosterone is the main mineralocorticoid. This cortisol is the main glucocorticoid in human beings. In some lower animal there are other steroids. Then there is a third group of hormones which are known as androgens. Andro stands for male, estro for female. Androgen, these are the male steroid hormones. So adrenal cortex is present both in male and female. So these male hormones are produced in female as well from the adrenal cortex. If these hormones are more in female, they will affect the female functions as well. We will see. So there are a group of hormones which are known as androgens, same effect as the male sex hormone. They are similar, effects are similar to testosterone. उसी किस्म की चीजें हैं तरह से changes के साथ. So this is that structure of the adrenal gland. This is the adrenal gland. This one is the adrenal medulla producing epinephrine, and outer is the cortex. Now here you can see this cortex is divided into 3 zones. आगे आ रहा है, हम खोलेंगे स्लाइड में भी, या डायग्राम में आप यहाँ पे देख लें. Outermost zone is known as zona glomerulosa. This is mineralocorticoid secretion area. And then inner zone is zona fasciculata, and then the white one is the zona reticularis. Both produce the cortisol and androgens. Mineralocorticoids are produced from the outermost, and inner 2 zone produce the other 2 groups of the hormone collectively. So there are 3 distinct zones, 3 distinct areas in the adrenal cortex, जिसको अभी zona glomerulosa outermost अभी डायग्राम में हमने देखा था. Aldosterone or mineralocorticoids are solely produced here because the aldosterone synthetase enzyme is present only in the cells of the zona glomerulosa only, outermost zone. And zona fasciculata, inner zone, that is the glucocorticoids, cortisol and corticosterone are other glucocorticoids. There are many, but primarily it is the cortisol. So these are produced from this zona fasciculata. Adrenal androgens and estrogen, female hormone भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत पैदा होती है. Androgens are the male hormone and estrogen are the female hormone. Both are produced from the zona this fasciculata. And zona reticularis again the same. This you यहाँ पे आप रख सकते हैं. Both glucocorticoid and the androgens are produced from the zona reticularis as well. दोनों से पैदा होता है ग्लूकोकार्टिकाइड, कार्टिसोल एंड कार्टिकोस्टेरोन, एंड एड्रीनल एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन दोनों. सो ये दोनों ग्रुप ऑफ हार्मोन इन दोनों से इकट्ठे पैदा होते हैं, लेकिन जोना ग्रामेरुलोसा से सिर्फ एल्डोस्टेरोन पैदा होती है. नाउ द सिंथेसिस ऑफ द एंड सिक्रीशन ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स, they are all steroid, they are derived from cholesterol. बार बार हम बोल चुके हैं इसको. तो सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल आ कहाँ से रही है? 80% this cholesterol for this synthesis of these steroid hormone adrenal cortex is coming from the LDL, low density lipoprotein in the blood. Blood से ले रही है cholesterol. 80% of this cholesterol is taken from this LDL receptor, यहाँ से ले रहे हैं, and बाकी 20% is synthesized in the adrenal cortex. So 20% synthesized from the acetate in the adrenal cortex. So adrenal cortex भी cholesterol बनाता है. This is the biochemical formulae of the steroid hormone. The topmost is this is the sterol ring is present. This is cholesterol. और इसमें addition, substitution, pregnenolone is the basic conversion of cholesterol into pregnenolone. This pregnenolone is finally converted into all these hormones, progesterone and corticosterone and aldosterone and cortisol and many other hormones. सारे वहां से ही पैदा होते हैं. बायोकेमिकल डिटेल यहाँ पे सिर्फ एम्फेसाइज ये करना है. ऑल दीज हार्मोन्स हैव गॉट द बेसिक
the sterol ring is present, and there is addition substitution of the other elements leading to the formation of these hormones and drastic differences in the functions of these hormones. So these are the steroid hormones. Now we are going to talk about mineralocorticoid. Aldosterone is the main mineralocorticoid. Aldosterone, the most potent 90% of the total mineralocorticoid activity, मैंने पहले 95% कहा था, 90 to 95% of the total mineralocorticoid activity is only by one hormone, aldosterone. Cortisol, which is a glucocorticoid, that has got the mineralocorticoid activity. Estrogen, the female hormone, or testosterone, the male hormone, or progesterone, the female hormone, all the steroids have got some mineralocorticoid activity, but their major functions are the other activities. The aldosterone has got the very powerful mineralocorticoid activity. Then there is desoxycorticosterone. This is also produced from the adrenal cortex, but much less potent, and very small amount is produced, so it is practically not important hormone. Then corticosterone, rats में ये होती है, rats में एल्डोस्टेरोन के बजाय दिस कार्टिकोस्टेरोन, रैट्स का नाम इसलिए ले रहे हूँ कि हमारे रिसर्च वर्कर बहुत से रैट्स इस्तेमाल करते हैं, तो रैट्स में कार्टिकोस्टेरोन है द प्राइमरी मिनरलोकार्टिकाइड, स्लाइट मिनरलोकार्टिकाइड एक्टिविटी इन ह्यूमन बीइंग, कार्टिकोस्टेरोन पैदा होती है, थोड़ा सा फंक्शन इसका भी है. कार्टिसोल, this is a glucocorticoid, but it has got mineralocorticoid activity. पहले भी मैंने कहा all the steroids, most of the steroids they have got mineralocorticoid activity. ये जो फीमेल जब प्रेगनेंसी होती है, there is very high level of female hormone, estrogen, progesterone, तो उनमें mineralocorticoid activity इतनी ज्यादा होती है कि there may be hypertension, swelling हो सकती है, उसको हम देखेंगे प्रेगनेंसी को जब हम डिस्कस करेंगे. तो ऑल द स्टीरॉइड, चाहे वो मेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, मिनरलोकार्टिकाइड एक्टिविटी किसी हद तक सबकी मौजूद होती है. देन ग्लूकोकार्टिकाइड्स, cortisol is the main glucocorticoid. 95% of the total glucocorticoid activity is due to only cortisol, and corticosterone is another glucocorticoid, that is 4% of the total glucocorticoid activity. So यही दो हार्मोन है जो ज्यादा ये काम करती हैं, much less potent than the cortisol. cortisol इतनी पावरफुल है, ये पावरफुल भी नहीं है और अमाउंट भी कम है. cortisone is another, this is the synthetic, almost as potent as cortisol. ये जो इंजेक्शन कार्टिसोन, आपने हाइड्रोकार्टिसोन और कार्टिसोन के नाम से सुने होंगे. कार्टिसोन इज अ सिंथेटिक मिनरलोकार्टिकाइड जो हम बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं. दिस इज अनदर प्रेडनिसोलोन सिंथेटिक ड्रग्स, आपने कहा स्टीरॉयड ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं वेरी कॉमनली. प्रेडनिसोलोन अ वेरी कॉमनली स्टीरॉयड यूज्ड सिंथेटिक स्टीरॉयड, 4 टाइम एज पोटेंट एज कार्टिसोल. ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंथेटिक है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से नहीं पैदा होती है, वैसे नाम यहाँ लिख दिए हैं पता हो. तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन ये भी सिंथेटिक है, प्रेडनिसोलोन भी है और मिथाइल प्रेडनिस 5 टाइम मोर पोटेंट देन द कार्टिसोल, ये और भी उससे भी स्ट्रांग है. तो असली ये हमारे पास कार्टिसोल है जिसको हमने डिस्कस करना है. डेक्सामिथासोन ये भी सिंथेटिक स्टीरॉयड है, बहुत कॉमनली हमारी ड्रग्स में इस्तेमाल होती है. 30 टाइम्स एज पोटेंट एट द कार्टिसोल, इतनी स्ट्रॉन्ग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. Adrenocortical hormones are bound to plasma protein. Most of the steroid hormone produced from adrenal cortex, they are released and they are bound to plasma protein. 90 to 95% are bound to plasma protein, mostly to globulin, जिसको कहते हैं cortisol binding globulin. cortisol binding globulin उसके साथ और ट्रांसकार्टिन भी उसी को कहते हैं, transcartin or cortisol binding globulin. Small amount is also produced to bound to albumin. albumin हमारा प्लाज्मा प्रोटीन जो ज्यादातर प्लाज्मा प्रोटीन albumin है, लेकिन इसके लिए खास प्रोटीन है, that is the cortisol binding globulin portion से albumin के साथ भी कंबाइन होती है. relatively long life of 60 to 90 minutes इनकी इसलिए है कि दे आर बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन. पहले भी हमने जिक्र किया था, एनीथिंग विच इज बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन इज मोर लायबल टू परसिस्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन बिकॉज इट इज नॉट इजीली डिफ्यूजिबल, तो डिग्रेड भी नहीं होती आसानी से, लॉन्ग लाइफ है. सो कार्टिसोल का ताल्लुक इस तरह है. एल्डोस्टेरोन भी इसी तरह है, अबाउट 60% कंबाइंड विद द प्लाज्मा प्रोटीन, वो ज्यादा बाइंड करती है 90%, ये 60% इज बाउंड टू प्लाज्मा, 40% इज इन द फ्री फॉर्म.
ये फ्री फार्म में काफी हद तक है। और वो फ्री फार्म में क्या होगा, 95% इसके साथ बाउंड है और कुछ एल्ब्यूमिन का हाथ बाउंड है, वो तो फ्री फार्म में कार्टिसोल बहुत थोड़ी रह गई। ये फ्री फार्म में भी अबाउट 30 to 40% फ्री फार्म में अवेलेबल है। रिलेटिवली शार्ट हाफ लाइफ क्यों के ये फ्री फार्म में काफी मौजूद है। 20 मिनट से दी शार्ट हाफ लाइफ इसकी है। एंड लॉन्ग हाफ लाइफ उनकी 60 to 90 मिनट्स है। कार्टिसोल ज्यादा देर तक ब्लड में परसिस्ट करती है, लॉन्ग, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। इसमें आधी तो बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन है, बाकी आधी फ्री है। तो इसका हाफ लाइफ इज ओनली 20 मिनट्स। So the adrenocortical hormones are metabolized in liver. Any hormone which is produced has to be metabolized, has to be eliminated, has to be cleared off. So they are inactivated in the liver by conjugation to glucuronic acid and sulfates. आमतौर पर इनकी inactivity कैसे करता है, लिवर में इनके साथ सल्फोनिक एसिड ऐड करके, ये ग्लूकोरॉनिक एसिड ऐड करके, ये सल्फेट्स बना के दे बिकम इनएक्टिव। लिवर में काम ये होता है। So about 20% of these conjugates are excreted in the bile and then in the feces. ये liver से conjugate निकल के bile में आते हैं, bile से intestine में आते हैं, they are lost in the feces. Feces में they are got rid of. And remaining 75% वो फिर blood में चूंकि circulate कर रहे होते हैं, they are filtered easily by in the glomerulus in the urine formation process में, they are filtered and they are lost in the urine. So 25% तो feces में lost होते हैं. The degradation products of these steroids or hormone, they are degradation products, हम क्या कहें, conjugation with the glucuronic acid and sulfates. So diseases of the liver, अगर liver खराब है तो then of course degradation will be difficult. And so diseases of the liver markedly depress the rate of inactivation. वो ज्यादा देर तक ब्लड में ज्यादा एक्टिविटी शो होगी। और अगर किडनी खराब है, किडनी डिजीजेस रिड्यूस द एक्सक्रीशन ऑफ द इनएक्टिव कंजुगेट्स, किडनी खराब हो तो उनकी एक्सक्रीशन स्लो हो जाएगी, लेकिन वो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। तो दैट्स मेरे ख्याल में ये प्राइमरी हम इंट्रोडक्शन टू द एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स है। तो हम इंडिविजुअल हार्मोन को हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट। आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ एल्डोस्टेरोन, द मिनरलोकार्टिकाइड डिस्कस हम करेंगे। थैंक यू। और इसको आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें, हमारे पेज को शेयर कर दें इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट टाइम हम एल्डोस्टेरोन के फंक्शन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।